हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर्व। मैं मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स लैंग्वेज डेली। सो लेट्स डिस्कस दिस टाइम कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक पिट्टी इंजीनियरिंग इज द स्टॉक नेम। डेली टाइम फ्रेम हमारा टाइम फ्रेम होगा आज का यूज करने का गाइस, and we will be discussing about the price action terms ki what could be the possible idea behind this. Also guys, I have very good ideas because Nifty gave a very good 150 180 point almost move today, and Bank Nifty is 200 300 point move. So a really good bullish move, bullish impactful move today by the markets. Okay, because you guys can see for the past few days there was a consolidation in Nifty in the form of lower wick rejections. Then again, more consolidation in lower wick rejections, which were converted from red rejections to positive green closing rejections on the higher side. Then body candle on the higher side, and then today a small lower wick, very good body candle movement in Nifty that we can see. If in the upcoming days we are seeing the levels of 18,000 if that's what we are seeing in the upcoming days, then we should be ready for which stocks we should be investing on. Right now, this is not a call, this is not an advice. Okay, ये कोई भी call नहीं है, कोई advice नहीं है guys, पहले बता दूं. और if you have made this far in the video, then do follow me on my telegram link the description में दिया हुआ है. वहां पे all the stocks, all the analysis are being given. ठीक है, सिंजन का कल ही वीडियो बनाया था, यू गाइस कैन सी फॉलो अप वीडियो, यहाँ पे है, वीडियो का पूरा लिंक है. ओके, इस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई इट इज अ गुड आइडिया. ओके, आई नेवर एक्सप्लेन कि व्हाई की ये स्टॉक ले लो, यू शुड टेक दिस स्टॉक. आई नेवर एक्सप्लेन दीज थिंग्स. I always explain things like why this could be a very good idea. Now it's completely on you. Your analysis is most important, your thinking is most important, your discussion is most important in the group. Okay, nothing else. So if you really are interested in learning and not cramming things, like कि किसी ने बोला कि if this stock is good तुरंत buy कर लिया, नहीं, this is the wrong way of trading. Okay, first understand the dynamics. For example, आज पिट्टी इंजीनियर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So why I'm discussing about this stock? Okay, there should be some parameters, there should be some things that are good about the stock, right? So if you check today's volume is not very good. Okay, volume is not huge. Okay, you can see that today's volume was more than the usual volume that the stock give in its days. Okay, first thing. Second thing, the stock has given a breakout. See, this is a line and this is a consolidation here, a very good consolidation in this zone. Okay, at the consolidation bar it could have given a, यहाँ पे it could have given a downside candle as well, and then should have continued the momentum, but it never did. Okay, rather it gave a upside breakout. Okay, so that's a very good thing. So here one can play a very good momentum trade of 8% stop loss, and they can play for first 14-15% momentum. Okay, that is मतलब ये पहला होगा हमारा टारगेट. अब यहाँ से हम हाइस को मिलाते हैं. We should join the highs and we should take out कि यार कितना ऊपर जा सकता है. तो यहाँ से दिख रहा है बहुत ऊपर जा सकता है because the consolidation. See, जब भी हमें दिखेगा कि consolidation period is big. Okay, so if you check the consolidation from this date till this date, this is a 400-day consolidation period. तो ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. Why? Because you guys can see this is 30%. तो ये स्टॉक की इस तरीके की मेंटालिटी रही है. ठीक है, यहाँ पे आप देखो 100% का मोमेंटम मूव दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 50% का मूव दिया है, यहाँ से इस डिप से यहाँ तक 56% का मूव दिया है. सो व्हाई कांट दिस स्टॉक गिव अ मूव ऑफ अगेन अ 50% फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस एरिया, राइट? सो इट कैन गिव, राइट? सो दैट्स द ये आज का लर्निंग है that after a huge consolidation, okay, and the stock is not breaking the lows guys. देखो हर मतलब उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आया, फिर इस लो पे बाइंग आई, फिर इस लो पे बाइंग आई, ये ऑब्जर्वेशन है, फिर इस लो पे बाइंग आई. उसके बाद जब ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, तब आप देखोगे कि इसमें बाइंग तब भी जल्दी आ रही थी. ओके, अगेन, ओके, व्हेन इट वाज इन अप ट्रेंड तब तो बाइंग ऑफ कोर्स जल्दी आएगी जब व्हेन द स्टॉक इज फॉलिंग. ओके, यहाँ तक तो अच्छा खासा रहा, फिर देखो स्लाइटली एक लोअर लो बनाया, ऐसा नहीं कि ब्रेक कर दिया और उसको ब्रेक कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ. सो कि ओके, तो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है जो ब्रेक करके ब्रेक करता है, दैट शोज अ डेडली डाउनसाइड मोमेंटम. सो नाउ वी आर एमिंग फॉर गाइस 70 लाइक्स फॉर दिस वीडियो. आप लोग जितने लाइक्स मैं बोलता हूँ, यू गाइस डू इट. सो लेट्स एम फॉर 70 लाइक्स फॉर दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो पे भी हो जाएंगे. ओके, this is a huge target that I'm giving here. Okay, potential target. Okay, you guys are free to discuss. ठीक है,
I'm like मैं कभी calls tips provide इन सब चीजों के खिलाफ हूँ, इन सब चीजों के एकदम against हूँ. Okay, but the most important thing is discussion, guys. And मेरे टेलीग्राम पे there is a very good discussion that happens every day, जिसमें मैं पार्ट लेता हूँ, कभी लेता हूँ, कभी नहीं लेता हूँ. Okay, but comment section में very good discussion. So let me know कि what are your thoughts, what are your thinking. 14-15% क्या easily निकाल सकते हो स्टॉक से, 20% या फिर 40% is also a very good target in mid term type. जब तक कि अर्निंग्स क्या पता नेक्स्ट अर्निंग्स तक वेट कर सकते हैं, दैट इज 18-20 days, राइट? वही एक दो हफ्ते का वेट अच्छा खासा, राइट? सो लेट मी नो गाइस, एंड दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड. सो ये एक स्टॉक हो गया पिट्टी इंजीनियरिंग. देन आई हैव अ लॉट मोर स्टॉक्स फॉर यू गाइस on my cards. PI industry हो गया, Laopala हो गया, EIH Hotel, Alchem, and many more, Sula. So if you want the analysis to be done on these stocks, follow me on my telegram पे follow करो. वहां पे let me know which stock you guys want me to analyze. I'll make the pattern, I'll do the analysis, and we'll see you in the next video. Thank you so much, guys.